What have we gathered on the eve of Holi? Everybody wants to lose some weight, yes or no? सब लोग चाहते हैं थोड़ा बहुत केजीज लूज हो जाए. वसंती मैम हंस रही है ना? मन मन में सबको चाहिए अच्छा, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? पार्टी में जाना है, एनिवर्सरीज है, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, स्पेशली द women folk. We have our cosmetic concerns as well, beauty. तो क्या करें वेट लॉस के लिए? Is it difficult to lose weight? Yes or no? क्या वेट लॉस करना डिफिकल्ट है? Anybody from the participants group? I can see a few known faces. Yes, Monica ma'am says yes, it's difficult. Why, Monica ma'am? Maybe you've tried a lot of things and it is really difficult to maintain those rigorous diets. Exercise karo. Oh my God, so much to do. Pareshan ho gaye. Long term nahi hota hai. Yes or no? So we want something that is going to be feasible and is going to be long term, and we all look slim trim. Yes or no? Yes or no? Very difficult. If we control our tongue, then it's easy. Jaideep sir says, if we control our tongue. और अगर आपको बोला जाए टंग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वेट लॉस हो जाएगा. Does it make you feel happy? Yes or no? कि no need to control your tongue and still you will lose weight. So here we come with this unique therapy where you don't have to do anything. No rigorous diets, no rigorous exercise, but only and only one thing, your dedication and hard work has to be there with discipline. Yes or no? How many of us are ready to do that on the eve of Holi? Okay, Monica ma'am says yes, difficult hai, fir bhi main koshish karungi. Yes, Neeta ma'am, I can see her smiling. Renu ma'am gives me a thumbs up. Okay. So I'm getting a lot of yes in the chat box. So we are all excited to know how we are going to have a weight loss. So if you give me some of your screen time, I'll share with you the details. Do I have your permission? क्या आपकी permission है मुझे to take some of your screen time? Okay. So just give me 2 minutes. Okay, Anilji, are you able to see? Anilji, are you able to see the screen? No. Okay, just a second. Yes, now it's visible. Okay. Okay, Ameda, weight management with Kumbhak, the healthy way, the correct way. Okay, तो हम लोग weight loss कैसे करेंगे? By building our own internal strength. Okay, जो weak factors है, metabolism slow क्यों है, वो सब कुछ हम सही करेंगे कुंभक से. The only and the only methodology which has absolutely no side effects. So let's go further. Namaskar. I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra. Many of you all are familiar with me.
and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the rigorous diet plans that restrict you and are not the correct way to get into shape. And as one of the participants said, no need to control your tongue, especially with Holi round the corner, sweets around the corner. Who wants to control their tongue? So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi and a human exponents expert. तो क्या करते हैं स्वामी राज विभू जी? He has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. So he has a unique perspective about the human body and how it functions at its best and can be corrected and brought back to balance in its natural state. So who is this webinar for? ये webinar आखिर है किसके लिए? For people who are tired of temporary solutions. अरे सुबह उठो जिम जाना है, अरे मुझे ये खाने को नहीं मिलेगा, अरे we have to be off wheat, gluten free diet, no sweets. Nobody wants this, right? और फिर भी क्या होता है जब वो डाइट छोड़ा, we are back to square one. So we are tired of these temporary solutions. तो हमें कुछ natural चाहिए, permanent चाहिए, जो हम कर सकते हैं. So people who want to take charge of their health with their own hands are willing to work on themselves and come out of their fat or weight issues. So weight management with Kumbhak, the right way, freedom from restrictive diet plan. और क्या चाहिए हमें? We Indians are very foodie. Everybody knows that. Nobody wants to control the yummy food that we eat. तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस तरह से आप कर सकते हैं ये आपको बताएंगे स्वामी राज विभू जी. So what you learn in today's webinar, आप इस वेबिनार में क्या सीखने वाले हैं? आखिर बॉडी फैट होता क्या है? What is fat? Why the body creates fat? ये तो बॉडी है हमारी, वो फैट क्यों क्रिएट करता है? कुछ तो रीजन होगा. A new way to look at weight management. Everybody knows about weight management. आपने VLCC ट्राई किया है, आपने जिम ट्राई किया है. So why not look at weight management in a newer perspective? What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak for weight management? How Kumbhak works on the body? आप कैसे कुंभक द्वारा अपना वेट बैलेंस कर सकते हैं? So let's hear from Swami Raj Vibhuji how we are going to control our weight through Kumbhak. Thank you so much for listening to me patiently. And I would just request Swami Raj Vibhuji to please enlighten us as to how we are going to control our weight through Kumbhak. Thank you so much. Namaste, Swamiji. Okay, Ameda. First of all, the meaning of this word is basically whatever is excess in a system, if that excess is taken care of, that state is called as Ameda. Or in simple terms, Meda means fat, Ameda means fat free. ठीक है ना, आजकल फैट फ्री बहुत फैशन में है ना. So Ameda means fat free. Now, how this body can get rid of whatever is excess in this body?
So first, let us understand why it happens, why this excess happens. In relatable terms, आपको बड़े ज्ञानी वाले शब्द बोले जाते हैं ना, पढ़ाए जाते हैं, गूगल में जाओगे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलता ना, तो आप कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन यू कोरिलेट इट विथ? तो मैं कोरिलेटेबल और रिलेटेबल टर्म्स में आपसे बात करूंगा, सो दैट यू गेट इट वेरी क्लियर, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये क्या है. तो द मोमेंट यू नो वेट इंक्रीजेस, आपके अंदर वेट थोड़ा बढ़ जाता है, what is the first difficulty you get in? If you observe yourself, अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो जब पतले दुबले थे तो मूवमेंट बड़ा आसान था ना, मूविंग अराउंड वाज प्रीटी इजी. द मोमेंट वेट इंक्रीजेस, movement becomes a little difficult. But what is the first thing that you can see, observe within you? Do you know your inhalation becomes short? आपका इनहेलेशन, सांस लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाए. दैट इज वाई इफ यू डू अ लिटिल मोर वर्क, आपकी सांस की आवाज आने लग जाती है. यू इनहेल, यू ट्राई टू पुल इन मोर, हाफने लग जाते हैं आप. सो this is the first thing, if you observe yourself. But also the problem is you are more observing the screens rather than yourself, है ना. आजकल तो स्क्रीन को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, अपने आप को ऑब्जर्व करने के मुकाबले. सो आपकी सांस कम आने लग जाती है, शॉर्टर ब्रेथ, इनहेलेशन ज्यादा. नाउ इफ इनहेलेशन बिकम्स शॉर्ट, do you know what is the first thing that gets impacted in your body? आपके शरीर में पहली कौन सी चीज का असर आ जाता है? In कुंभक विज्ञान we always relate inhalation with अग्नि. इनहेलेशन को हीट के साथ में रिलेट करते हैं. So there is something called as metabolic heat. आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक हीट वो कम बनता है. अगेन द लार्जर अम्ब्रेला इज टर्म्ड एज गार्ह्य पत्य अग्नि. क्या कम हो जाती है? गार्ह्य पत्य अग्नि. ये पूरा मेटाबॉलिक स्फीयर का पूरा अम्ब्रेला है. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड दिस इज द अम्ब्रेला. सो गार्ह्य पत्य अग्नि कम हो जाता है. Now, if metabolic heat happens, where does metabolism happen? Metabolism होता कहाँ? First step of metabolism happens in your liver. Liver में metabolism शुरुआत होती है. Then it happens on every cell and tissue. Every organ, cells and tissue. हर एक organ, cells और tissue में metabolism होता. Now, if गार्हपत्य अग्नि becomes less, everywhere the metabolism will become down, नीचे आ जाएगा. So whatever food you eat and the food becomes usable glucose, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत कम हो जाएगी, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज वीक. उतना जरूरत नहीं है एनर्जी का. तो क्या करेगा आपका लिवर? व्हाट विल द लिवर डू और व्हाट विल योर बॉडी डू? जो भी आपने खाया उसको स्टोरेज में डाल देगा, इजंट इट? नहीं, इट विल पुश इट टुवर्ड स्टोरेज. तो व्हाट विल हैपन? एडिपोज टिश्यू, फैट सेल्स वो बढ़ जाएंगे आपके शरीर में. स्टोरेज ज्यादा हो गया. सिंपल, रिलेटेबल, समझ में आ रहा है? किससे रिलेट किया? व्हाट डिड आई कोरिलेट विथ? इनहेलेशन. इनहेलेशन से रिलेट किया ना. नाउ देयर कैन बी टू रीजन फॉर द शॉर्टनिंग अप ऑफ योर इनहेलेशन. वन, योर इंटरनल बॉडी फैक्टर्स. सेकेंड, एक्सटर्नल फैक्टर्स.
So fundamentally, I'm exploring 5 steps towards Ameda. पहली चीज क्या बताया? Inhalation, lack of inhalation. Why will it happen? Due to internal factors and external factors. But let us see if this becomes less. What else we get into? एक तो स्टोरेज बढ़ गया, यूजेबिलिटी कम हो गई. थोड़ा भी खाएंगे तो भी बढ़ते जाएंगे. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल. यस और नो? कम भी खाएंगे तो भी वेट कम नहीं होता, तो भी वो बढ़ता ही है, क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा है ना. आप थोड़ा भी डालोगे तो इट विल जस्ट एग्रीगेट, एग्रीगेशन ज्यादा हो रहा है. सो व्हाट एल्स? और क्या चीज होती है? So how much your body absorbs things? If you want to suck in a glass of juice, what do? You pull it in. मुंह से खींचते हैं ना, that is inhalation. Yes or no? खींचने की क्षमता कम हो गई ना आपकी. Inhalation क्यों कम हो गया? The strength of pulling in has gone down. So your body will not absorb proper nutrition. Yes or no? Nutrition नहीं मिलेगा, deficiency होगी. Even the body is big, but there will be lot of deficiency. Vitamin deficiency, mineral deficiency, calcium deficiency, ये deficiency बहुत ज्यादा होगा. Now deficiency कम होता है. Apart from that, you know, inhaling less also means you have less acceptance to things. Yes or no? आप accept नहीं कर पा रहे ना किसी चीज को ज्यादा. Inhaling less also means less acceptance. What does it mean? Your body will create resistance. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वेट बढ़ने से. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? डायबिटीज हो जाएगी. नाउ आई एम कोरिलेटिंग इट विद द रियल थिंग्स. आपने अभी केवल शब्द ही सुना होगा, आपको ये नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है. आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस इज हैपनिंग. नाउ इफ इंसुलिन इज अ हार्मोन, will not other hormone resistance happen? It will also happen. So what will happen? In ladies, they can have a hormonal imbalance. Ladies can get into situations like PCOD, PCOS, endometriosis, hormonal imbalance, menstrual difficulty, difficulty in conception, infertility. Yes or no? ये सब सुना हुआ है आपने? I am just relating it. What will happen? Why will it happen? In males, insulin resistance, again, hormone resistance, infertility, diabetes, and deficiency syndrome. ठीक है, अभी आगे और थोड़ा बढ़ते. This is not all. Just I am correlating with lack of the strength of inhalation. फिर क्या होगा? What else? If your body will have lot of imbalances and disease, your body will switch on survival indicators. सर्वाइवल मैकेनिज्म को स्विच ऑन करेगा ना, उसको तो बचाना है अपने आप को. तो आपके सर्वाइवल इंडिकेटर्स जो है वो हाई दिखने लग जाएंगे. व्हाट आर योर सर्वाइवल इंडिकेटर्स? डू यू नो योर ब्लड प्रेशर इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर शुगर लेवल इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर. योर हॉर्मोन्स, योर इम्यूनिटी इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर.
योर व्हाइट ब्लड सेल इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर। तो आपके अंदर क्या होगा? शुगर लेवल ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। Why will it happen? Because you are lacking in the strength of inhalation. I've given you a little hint. I can go on and on and on with this, but देखो कितना भी ज्ञान बोल लो, solution तो नहीं मिलता ना ज्ञान से। So how can you increase the strength of your inhalation? Inhale ऐसे खींच के नहीं, वो खींचने की कैपेसिटी तो कम हो गई आपके। समझो इस बात को, you can't do that. That is not a solution. So you have lost certain strength of your body. तो कितने स्ट्रेंथ है आपके बॉडी में? हाउ मेनी स्ट्रेंथ इज देयर इन योर बॉडी? देयर आर 6 बेसिक स्ट्रेंथ। व्हाट आर दोस? देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। कितने हो गए? 6. So to increase the strength of inhalation, what you need to increase? How many bala? At least 3 bala. 3 बल आपको कम से कम बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या है? What are those? धातु बल, दोष बल एंड शरीर बल और देह बल। ये 3 चीज है जो आपको बढ़ाना पड़ेगा। धातु बल, दोष बल एंड देह बल। Now, how you can increase it? कैसे increase कर सकते? This is the first step. I'm just talking about the first step. I'll talk about the other 4 steps also. कोई भी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं? Now, एक एग्जांपल ले, Let's take one example. बाकी में I'll also take other examples, बस यहां पे एक एग्जांपल ले। Let's push the other palm. एक हाथ से with your right fist, let's push the left palm. थोड़ा पुश करो, धक्का दो, स्ट्रेंथ इंक्रीज करो, पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ाओ जरा, पुश इट हार्ड। कैसे पुश कर, कैसे पुश कर रहे हैं? नाउ लुक बिहाइंड, वंस अगेन डू इट, लुक बिहाइंड। सांस रोक के, यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ। सांस रोक के कर रहे हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज योर बल? हाउ डू यू इंक्रीज योर बल? By holding your breath. If you increase the breath hold capacity, you will increase all the balas. पहला पार्ट बोल रहा हूं, केवल एक एग्जांपल दिया। I'll give more example. एक बात हमारे को समझ में आ गई कि where is the problem, what all we can get into and how to counter that. ये समझ में आ गया? सेकेंड स्टेप, मोटे इंसान को छू के देखें। जस्ट टच अ फैट पर्सन एंड टच अ नॉर्मल लीन पर्सन। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस यू विल फील? अ फैट पर्सन इज कूलर। यू विल, वो फील कैसा होगा? थोड़ा ठंडा फील होगा, थोड़ा ठंडा फील होगा एक नॉर्मल दूसरे बंदे के मुकाबले में। द फैट पर्सन विल फील अ लिटिल कूलर। आप करके देखो जरा, ठीक है ना? डू दिस these kind of experiments. That's how you will understand. So a fat person of the same age I'm talking about. बच्चे को छू के नहीं देखना, बच्चा फैट नहीं होता कोई, उसका मेटाबॉलिक हीट अच्छा होता। ऑफ द सेम एज, अगर 2
स्ट्रक्चर के बंदे को टच करके देंगे ना, फैट पर्सन विल फील कूलर. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? द हीट ऑफ द बॉडी इज लेस. इतना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल कोरिलेशन. हीट ऑफ द बॉडी इज लेस. यू ऑल्सो नो हीट बढ़ जाएगा तो मेरा फैट डिसॉल्व हो जाएगा. इफ हीट इंक्रीजेस माय फैट विल डिसॉल्व. यस और नो? So the second problem is heat of the body has gone down. अग्नि बल कमजोर हो गया. जठर अग्नि कमजोर हो गई. Now do this experiment. ये यहां पे नहीं कर सकते, so do it at your own convenience. कभी करके आप देखो. Hold your breath. सांस लेके सांस रोक लो and do not move. Move ना करें, शरीर को हिलाएं नहीं. Do it few times. कुछ समय करें. You'll see you'll start sweating. शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी. Those people who are doing कुंभक, they know it. Simple. कितना आसानी से अचीव कर लिया हमने. हीट ऑफ द बॉडी बढ़ा दिया. You didn't even do any exercise. Just sitting without even movement, you can increase the heat of the body. So the moment you start doing kumbhak, the Agni Bala or the heat factor, the strength of heat factor of your body will increase, and thereby you'll see a loss of weight in your body. Excessive weight nikal jata. ठीक है ना? And what else? You'll see high energy. जो अभी आलस आता है ना, you feel lethargic, that will go away. So you'll be able to do lot of activities because you would rather want to do lot of activities. दूसरा पक्ष रखा मैंने, ठीक है? Now तीसरा पक्ष रख रहा हूं, third part. If you are fat, take two people of the same age. One fat, one not that, not fat. आप एक काम करें, दोनों को सामने खड़ा करके रखें और धक्का दें दोनों को. Push with the same strength, both people. दोनों को धक्का दें. Who will get into imbalance more? The fat person will get into imbalance more. वो अपने आप को संभाल नहीं पाए. A fat person will not be able to balance himself or herself that fast or with that efficiency. So what have you lost? अभी बताया, कुछ और स्ट्रेंथ बोला था. दोष बल, balancing strength. Dosha bala is balancing strength. Now this is also your immunity. The leverage you take with this body, how fast you get into a problem. आपने देखा होगा ना, have you seen those street children, red light पे बच्चे जो भीख मांगते हैं, those kids, they bear all the season without getting into disease. Yes or no? और हमारे बच्चों को पानी, बारिश होगी थी, नहीं नहीं बारिश में मत जाना, you'll catch cold, and they also catch cold very easily. What is weak in them? दोष बल. इम्यूनिटी कम है ना, इसी को आप इम्यूनिटी बोलते हैं. आई एम टॉकिंग इन मोर लेजिटिमेट टर्म्स, जिसको आप समझ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर. इफ यू कांट गेट इनटू बैलेंस फिजिकली, will your body get into balance through some disease? It will lose that balance, creating strength. Dosha bala. The whole Ayurveda is based on dosha bala. Vata pitta kapha dosha. अगर इसका बैलेंसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप डिजीज से बचेंगे. दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. दोष बल इज इम्यूनिटी. सो क्या डाउन हो गया? इम्यूनिटी डाउन हो गया. आप बैलेंस कैसे करते हैं अपने आप को? सोल्यूशन, हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? करके देखें. किसी को बोले धक्का दो मुझे, पुश मी एंड सी बिहाइंड. हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. करके देखो.
सांस रोक के आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। जब आपको चक्कर आते हैं तो आप सांस रोक के बैलेंस। When you feel dizzy, you hold your breath and try to balance yourself. दोबारा से, how your immunity will increase, how your dosha bala will increase, how you can ensure that you do not get into difficulty, disease and difficulties very easily. Increase those dosha bala. How can you increase your dosha bala? By increasing the capacity of breath hold. कुंभक से कर सकते हैं और किसी चीज से नहीं कर सकते. Now, apart from that, अभी एक और मैंने बोला था देह बल, बॉडी का स्ट्रेंथ. You know, the moment the body becomes a little bloated, fat increases, the strength of the body also decreases. This is a common fact and experience of people who get into more fat, जिनके साथ में fat issues. You can also experience it through by clutching something. किसी चीज को आप पकड़ें, clutch करें. You'll see a fat person will be able to clutch it lesser than a lean person. तो आपका देह बल, शरीर का strength. That is why things become a little. You try to avoid any kind of work which requires a little push from the body. Exercise आपके लिए hell है. और एक्सरसाइज बना आपको करवाया जाए तो आपको आराम क्या मिलेगा, आपकी लाइफ खराब होगी. Because you will not experience it in a good way. आपको तो torturous लगेगा ना. If your deha bala is less, exercising will be torturous. And that is why, if you torture your body, do you think you can increase your health and increase the quality of your life? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? Heavy exercise is not a solution, rather it is a problem. Unless and until you increase your deha bala, exercising is not an option. The second thing is dieting again. Dieting. If your metabolic strength is good, you can actually go through dieting very easily and without any trouble. But if your metabolic strength is not that good, dieting will create weakness. बहुत weakness, आप तो आपकी लाइफ में weakness आ जाएगी. It is not about fat, but you will not be able to enjoy it. Just see people who diet. उनका चेहरा कैसा लगता है आपको? Dried up, no life, dull, खिलखिलाता चेहरा नहीं लगता. At least fat people have that glowing face. मगर एक डाइट किए हुए बंदे का तो पूरा निचड़ा हुआ चेहरा होता. Your metabolism is weak and your body will have to do excessive work. बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. उसका बल तो है नहीं, मगर उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा to dissolve the fat. अगर किसी कमजोर पांव से आप ज्यादा काम करवा लें तो पांव में कमजोरी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? Not excessive work. उससे excessive work नहीं करा सकते, legitimate work करवा सकते. So dieting becomes a burden, and you know what experience you get into. आपके शरीर का experience क्या है dieting करने में? So unless until you increase the metabolic strength of your body, dieting is not conducive. Rather, it will create problem. Second, इसके अलावा, apart from that, if you take any fat cutter or statin ले लिया आपने, fat cutter ले लिया, फिर क्या होगा? What will happen? So let me explore the fifth step. पांचवा step बता रहा हूं. If your body gets into risk, not just because of the weakness of internal strength, but because of the
environmental and social ecosystem. अगर उसकी वजह से आपके शरीर में रिस्क आता है, now what will happen? The moment body gets into risk, the body starts mitigating that risk. जब भी आपका शरीर के लाइफ को रिस्क होता है ना, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो जो मिटिगेशन है ना, रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, वो चालू कर देते. Now, when risk increases, the first thing that increases is inflammation in the body. आपके शरीर में inflammation होगा. So I'm giving you a simple example. If you get into a bruise, आपके स्किन पे एक bruise, एक खरोच लग गई. If you put a little fat, घी लगा लो, put ghee on that. The burning sensation gets down, isn't it? It comes down. वो जलन है वो एकदम से डाउन आ जाता है. Yes or no? The moment you put a chemical in the body, who takes the toll first? Chemical bomb जब आप डालते हैं अपने अंदर, medicine, I call them chemical bomb. जब आप डालते हैं, तो what is the first organ that gets impacted? Your liver. Liver में inflammation शुरू होता है. Liver starts getting into inflammation. How will the liver protect itself with that inflammation? उस inflammation से कैसे अपने आप को protect करेगा liver? आपने तो फैट लगा लिया ना, liver भी फैट लगाएगा ना. Will the liver not increase fat? Fatty liver. What is fatty liver? Protective mechanism. If your body gets into inflammation, will it not increase cholesterol and triglyceride? What is increase of cholesterol and triglyceride? Protective mechanism of your body. बचा रहा है आपका शरीर. Do you know cortisol, which is anti-stress hormone? It gets manufactured through your cholesterol. Cholesterol से बनता है वो. If your body gets into risk, will it not increase cortisol? अपने आप को बचाने के लिए एंटी स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ाएगा क्या? बढ़ाएगा ना. It will increase. But you take a statin to decrease that cholesterol and triglyceride and fat cutters. Are you increasing the risk of the body or are you helping your body? जो अपने आप को बचाने के लिए आपका शरीर काम कर रहा है, उसी को खत्म कर दो. आपकी सेना आपको बचाती है, सेना को मार दो. Are you doing good or bad? And there is lot of evidence. Statin खाएंगे तो डायबिटीज हो जाती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आता है. 25% of new diabetic cases is happening because of statins, atorvastatin, simvastatin. ऐसे स्टैटिन खाते हैं. आपका फैट कम करने के लिए आपको डॉक्टर पकड़ा देगा स्टैटिन, और आप बीमार होते जाओगे. क्योंकि आप अपने बॉडी को बचाने ही नहीं दे रहे अपने आप को. You are treating your body as a criminal. Since what this has happened? कब से आप अपने शरीर को क्रिमिनल ट्रीट करने लग गए? In the last 50 to 100 years. ये मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है. So is that good? I was more than 100 kgs. 100 किलो से ज्यादा था मैं. घी खा के अपना वेट कम कर लिया. एवरी डे आई कंज्यूम घी. घी खाने से वेट बढ़ता है क्या? Come on, example. I'm example in front of you. And there is not one example. Now there are many examples. हमारे प्रोग्राम में हजारों लोग हैं और सैकड़ों लोगों ने अपना घी खा के अपना वेट कम कर दिया. Because ghee reduces the risk factor of your body. कैसे खाना है, क्या करना है, वो तो हम प्रोग्राम में बताते हैं. So
There will be process, Ameda process, इसको हम Ameda process कह रहे हैं, which we will teach you. The total program is of 9 weeks, but it has 3 stages. Stage 1, stage 2, stage 3. Every stage is of 3 weeks. 3 हफ्ते की हर एक stage है. So if you come to stage 1, so you will learn Ameda 1 method, which will address all these things what I have explored. अभी तक जो भी बात किया ना मैं, whatever I talked about, it's a simple method which will strengthen all these aspects. Ameda 1, Ameda 2, Ameda 3. You can enroll for all these 3 stages at the same time also. For that, you will get added discount. But you can also test and try the first stage, which will be basic in nature. Third stage में ही हम customization करेंगे. We will do customization in the third stage. What customization? So tell me, everyone must have lost one strength more than the other strength. Yes or no? आपके शरीर का आपने strength खोया, तो कोई एक strength ज्यादा खोया होगा ना दूसरे के मुकाबले. So everybody has got into high fat state by or for different root cause, because of different root cause. हर एक का reason अलग है. Some people have fat with acidity in the body. Some people have fat with higher cholesterol. Some people have fat with diabetes. Some people have fat with thyroid issue. सबके लिए अलग अलग है ना, अलग अलग problem. You have different problem. Same increased fat levels but different root cause. जड़ अलग है सब में. So unless and until you find that root cause, your therapy is not complete. पूरा नहीं है आपका therapy. But we will do diagnosis only in the third stage. So the first stage is Ameda 1, a simple method you can do, test and try. इसके लिए आपको वो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है. नो डाइटिंग, नो एक्सरसाइज, नो केमिकल मेडिकेशन, कोई केमिकल मेडिसिन नहीं है. वी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी और एन ऑप्शन to you. You can also take a little support of some very specialized combinations, herbal combinations. वो भी आपको ऑप्शन देंगे, but that is an option only. आपको आपकी शक्तियां कोई भी दवाई नहीं बढ़ाती हैं, ये आपको समझना पड़े. So that is a support, not a therapy, not a solution. Solution नहीं है वो. It's a little support. You want to do it a little faster, take a little support of certain combination of herbs, very specialized, and it comes through a certain lineage. तो वो market में नहीं मिलता, and we have association with many yogic lineages and spiritual lineages and other siddha lineages, जिनके through वो आता है. Okay, you can take a little support of that, but that is optional. वो side में रखें. This is treatment. This is the thing. Ameda 1, Ameda 2. Ameda 2 will be a little more than Ameda 1. थोड़ा ऐसे मान के चलिए, a little more advanced than Ameda 1. Second stage आ गया वो. And Ameda 3, where we will also do a customization by doing diagnosis upon you. आपको form भरवाएंगे and we'll get to know एक simple Google form and we'll get to know what strength you have lost. So we will customize the whole Ameda 3 according to your diagnosis. So what it will also address is your disease. Because now we are getting to the root cause. Your disease is also owing to
or an outcome of that lack of strength. So if we increase that strength, your disease, you will see relief in your specific disease also, like blood pressure, heart disease, diabetes, thyroid issue, and other different kinds of disease. In general, it will also increase your immunity factor. It will also ensure that you do not get into problems later on in your life also. If you just get this lifestyle unto you, अगर आप इसे अपना लेते हैं तो आपकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी. So you'll also be protected from crashes and other disease which might happen later on in your life. तो ये 3 स्टेप में ये प्रोग्राम करेंगे. You can choose one by one also, or you can enroll for the whole 9 weeks also. है ना? उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. So it is up to you to make up your mind. Now there will also be a little diet perspective and lifestyle perspective. जिस तरीके से मैंने ये बताया आपको, you will not get in Google all these information. आपको Google में नहीं मिलने वाला, because we are not exploring life in other ways. So similarly, you will get lot of information about food and about lifestyle. So food will not be diet plan. Diet plan काम नहीं करता साहब. भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी. डाइट प्लान काम नहीं करता. Will tell you how to use food so that it supports your strength of the system. तो वो भी केवल आपके इंटरनल फैक्टर्स को एड्रेस करेगा जो आपका वीक हो गया. So how to use food for that and how to use your lifestyle towards that. एक और चीज, once you lose fat and keep on doing kumbhak, you cannot gain weight unless and until there is some organ damage which you have got into because of long deterioration in the body. शरीर में तो बहुत समय से डिटोरेशन चल रहा है ना, और उस पे से दवाइयां खा रहे हैं. So you might get into an organ damage, and that time your body will try to protect itself by increasing the fat. पर वो गलत नहीं है. You improve the organ, you improve that function, and your body will come out of the fat issue. तो पहली बात ये कि this is important for you to do, because what have you lost? You have lost certain strengths of your body. You must gain it to say it an actual treatment. ये वापस नहीं आएगा. In most of the cases, it will not come back. So I had weight issues approximately, you can say 15 years back. 15 साल से तो वेट का इशू अभी तक आया नहीं है, और अभी आएगा भी नहीं. I know this for sure. And my age is around 50. तो एक और proof, you will also, this also will do anti-aging for you. आपके लिए ये anti-aging भी करेगा. 3 years of kumbhak can make you 10 years young. Biologically I'm talking about. Your biological age will come down. आप टेस्ट करा के देख सकते. So this is about a little exploration about Ameda. In 3 steps we are doing this program. Ameda 1, Ameda 2, Ameda 3. 3 weeks program. Ameda 3 is the most advanced, where we will do the diagnosis also. So 9 week hai. You can enroll for the whole 9 week, or you can enroll for 3 weeks. That is up to you. एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, in the end, to end this my exposition of Ameda. See, we have used chemical on our land to get more produce. हमने अपनी जमीन पे खाद, पेस्टिसाइड यूज किया, उससे ज्यादा पैदावार लेने के लिए. And we have made our land barren, और हमने अपनी जमीन खराब कर दी.
अब वो 60 years तक केवल ये जमीन की उर्वरता बची हुई है, उसके बाद ये बिल्कुल बैरन हो जाएगा, unless until we start doing something, do something about this at this point of time. So now every government is pushing organic farming, जैविक खेती. ये जमीन आपका जब से पैदा हुए तब से इस पे केमिकल बॉम्ब्स डाले गए, and you have lost the strength of your body, the fertility of your body, the fertile strength of your body. You have lost the strength of coming out of disease. You have lost the strength of immunity. You have lost the strength of organ function. इसकी जैविक खेती कब करनी है? When do you want to start the organic farming of your body? इसकी जरूरत तो शायद आपको सबसे पहले है ना. So your body is crying helplessly and indicating in every which way that I am suffering. Please help your body. अपने शरीर की मदद करें. अपने शरीर की मदद आप दवाई खा के नहीं कर सकते. You can't do it by taking in chemicals. Taking good food is okay, but what will you do of genetically modified food? What will you do of the polluted environment? What will you do of that? Improving or eating good food is okay. कीजिए, use your body a lot, do exercises or whatever else you can do. But body के strength, internal strength को तो आपको कुंभक से बढ़ाना पड़े. This is the body's own mechanism to improve the strength of your system. ये compulsory कर लीजिए. Whatever else you do is okay, but this is what your body is crying for. उसकी थोड़ी मदद कर दीजिए, and you'll see your life will transform. With all the good wishes, I'll stop here. Thank you so much, Swamiji. Now I would like to ask certain questions. Okay. So there are certain questions which would be great if you can answer these questions. So some of the questions is that in how many months can we expect a weight loss? Please unmute yourself. Okay. So in how many days you can expect a weight loss? The weight loss process will start immediately the moment you start doing Kumbha. But the thing is, your body will have to gain that kind of strength. So if you want to run a marathon, will it happen in a day? No, you'll have to reach to a state of strength of running that marathon, isn't it? आपको अपने शरीर में उतनी strength लेके आना पड़ेगा कि आप marathon दौड़ सकें. So for some people, they can see result immediately if the strength has not deteriorated to that extent. But for other people who have got into multiple issues, their body will need a certain amount of time to bring back the strength. So people can see 5 kg weight loss to 15 kg weight loss in a month, depending upon how committedly they are doing Kumbhak, and if they are, and whatever else, if we will also suggest a supportive thing for them. If they are taking support, then they can expect much greater weight loss in a month. But it is not about how much you lose your weight, how fast. This is a bad concept actually. So you should lose weight by building in the strength of your body. So the question is, how long will you take to build the strength of your body? It will take different amount of time for different people. And this is how it should be. जल्दी का काम शैतान का होता ना. So वो इस तरीके से सोचना छोड़ना पड़ेगा.
लेट मी गिव यू अ डील, एक डील दूं मैं? अच्छा, 6 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा. इज इट बैड और गुड? इट इज गुड. It is good. And you will not feel weakness. In fact, your disease will also go. आपकी बीमारियां भी चली जाएंगी. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? So, how fast you can build the strength of your body is the question, and it will take different amount of time for different people. मगर lose तो करना है जी, ये आप मान के चलो. So, specifically I'm talking about weight, वो तो lose होगा ही होगा. ओके, सो वेट जो स्टक हो गया है, तो स्टक वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल. स्टक वेट किस कुछ रीजन से होता है. पहले आपको मालूम है क्या रीजन है? वही मैंने बताया, व्हाई इट हैज स्टक. तो आप देखिए, आप बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी आप ये स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं करते अपने अंदर. डाइटिंग से ये स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं करते. दवाई खाने से, फैट कटर खाने से आप ये स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं करते. Even through exercise, you don't build the internal organ strength and the functional strength. So the moment you drop that, वापस आ जाता. ये तो एक्सपीरियंस है ना सबका. The moment you drop whatever you are doing, it comes back. पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा? सिर्फ ये मैंने होगा या क्योर हो जाएगा? देखो, क्योर होने का मतलब क्या होता है? अगर आप क्योर होना ऐसा समझते हैं कि जो मॉडर्न पैरामीटर्स पे आप फिक्स होंगे तो क्योर होंगे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या आप सही सोच रहे हैं. Your blood pressure should be 120/80. No, it should be 100 plus your age plus minus 10. अगर आप 50 साल के हैं तो 100 plus 50, 150 plus minus 10 is normal. यानी 160 तक भी नॉर्मल है आपका. तो आप कौन से आइडिया पे, कौन से कहते हैं ना कि क्या एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है, आप उस नैरेटिव में अगर फंसे हुए हैं तो प्रॉब्लम. देखिए, एक बात समझ जाइए, इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ यू. टेक इट एज अ गारंटी. अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई डिजीज नहीं. योर शुगर माइट बी अ लिटिल हाई, योर ब्लड प्रेशर माइट बी अ लिटिल हाई, बट दैट इज नॉट अ डिजीज अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ सिम्टम. तो पहली बात तो सिम्टम चले जाएंगे तो डिजीज गई आपकी. बट यू माइट हैव एन आइडिया कि नहीं नहीं, ये नंबर में मुझे अपने आप को अटकाना है. दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड विथ योर डिजीज, यू आर इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ अ चैलेंज. जैसे स्पोर्ट्स का चैलेंज होता है, इतना मुझे भागना है, इतनी देर में भागना है. इफ यू आर टेकिंग अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ, व्हाट वी कैन डू, बट दैट आल्सो बिकम्स अ डिफिकल्टी फॉर द बॉडी. तो आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी, ये बात आप मान लीजिए. अगर इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ डिजीज विथ सम पैरामीटर कोरिलेटिंग इट, तो पहली बात तो ये सोचना ही है कि ये क्या मैं सही सोच रही हूं, सोच रहा हूं, है ना. तो मुझे एक बात बताओ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, प्रॉब्लम चली गई, क्यों आपको प्रॉब्लम में लाना है अपने आप को? लिव अ गुड लाइफ, लिव अ फुल लाइफ, इजंट इट? तो आपकी बीमारी इस तरीके से 100% चली जाएगी. पर्टिकुलर एक पार्ट से अगर वेट रिडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल मेनोपॉज के बाद देखा गया है लेडीज का टमी बहुत निकल के आता है, तो वो सही हो जाएगा क्या? अदरवाइज स्लिम बॉडी बट द टमी इज कमिंग आउट. There is a process will teach you to actually, क्योंकि गार्हे पत्ते अग्नि is addressed from the navel, and balancing the navel is something very primary that will teach you. तो ऐसा होता है, किसी एक पार्ट से वेट रिडक्शन करना होता है तो आपको उस पार्ट पे फोकस करना होता है, बस इतनी सी बात. देखिए, आप एक पार्ट पे बढ़ा भी तो लेते हैं ना, तो आप एक पार्ट से वेट रिड्यूस कर सकते हैं, मगर एक पार्ट से वेट रिड्यूस करना एज अ थॉट प्रोसेस इज नॉट करेक्ट. कि मुझे अपनी राइट टांग बढ़ा दो क्योंकि इससे मैं ज्यादा खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, दैट इज नॉट, बिकॉज आपको चलने में प्रॉब्लम आती है ना. एज अ थॉट प्रोसेस कि मुझे ना ये वाला पार्ट कर दो. सो इट इज कमिंग फ्रॉम द थॉट प्रोसेस दैट द मॉडर्न मेडिकल साइंस इज कैरिंग फ्रॉम द वेस्टर्न civilization.
वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो मॉडर्न मेडिकल साइंस जो ये थॉट प्रोसेस कैरी कर रहा है ना कि योर लिवर इज योर लिवर, योर हार्ट इज योर हार्ट, ये दोनों अलग अलग है. No, that is not how your body functions. Your liver cannot function without your heart. Your heart cannot function without your liver. नहीं नहीं, मेरे हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर दो, लिवर काम करे चाहे नहीं करे चलेगा. Will you be able to live? फंडामेंटली एक गलत थॉट प्रोसेस है ना. मेरे राइट आई का डॉक्टर अलग होना चाहिए, लेफ्ट आई का डॉक्टर अलग होना चाहिए. क्या ट्रीट कर रहे हैं आप? तब तो आप आखिरकार यू विल कम टू अ कंक्लूजन, नहीं आंख चेंज कर दो, बदल दो. यू विल नेवर बी एबल टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ आई. यही हो रहा है ना हमारे साथ में. व्हाट इज द सॉल्यूशन वी आर एंडिंग अप विथ? हार्ट बदल दो जी. हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने का किसी ने सोचा ही नहीं, विच योर बॉडी कैन डू इजिली. सो yes, we can address a particular part, but we will address it holistically also. ये दोनों हम करेंगे, वो पूरा होलिस्टिकली एड्रेस करना बहुत जरूरी है. Another question is, are there any diet restrictions or No, there like won't be a other- diet. There won't be a diet restriction. Now, talking about diet restriction, मुझे बताइए, आपको भूख लगे और आप खाओ नहीं, तो आर यू डूइंग जस्टिस विथ योर लाइफ? लेकिन अगर आपको भूख ही रेगुलेटेड लगे, इतना ज्यादा भूख नहीं लगे, एंड यू ईट अकॉर्डिंग टू योर हंगर, इज इट नॉट अ गुड थिंग? सो व्हाट कुम्मक विल आल्सो डू, इट विल रेगुलेट योर हंगर. इनिशियली इट माइट इंक्रीज योर हंगर. ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों को भूख बहुत ज्यादा ही लगती, बहुत लोगों को ज्यादा नहीं लगती. But first thing you will see is, first initially it will increase your hunger. इसका मतलब क्या हुआ? It is increasing your metabolism, which is good thing, which is ultimately help you to come out of your the excessive fat. But it will also regulate your quotient, hunger quotient. आप खाने के बाद ना अपने आप ही छोड़ दोगे. Craving will come down. Craving will come down. आपकी क्रेविंग खत्म हो जाए एंड सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज. सेटिएशन बढ़ जाएगा आपका. इज इट नॉट अ गुड थिंग? डाइट कम करने की जगह हंगर को आप रेगुलेट कर दो. इज इट नॉट अ गुड थिंग? दैट इज व्हाट अमेदा विल डू. अमेदा प्रोग्राम विल डू. Okay. Next question, Swamiji. Many women are concerned about the cosmetic part of it, where the face becomes dull due to weight loss. So in Kumbhak, that will be taken care of? Yes, 100%. More than what you can even imagine. पहली बात तो ये. दूसरी बात, your skin will become soft if it has hard edges. In terms of cosmetic, I've told you anti-aging होगा आपका. सबसे बड़ा कॉस्मेटिक जो रिजल्ट आपको चाहिए वो तो एंटी एजिंग चाहिए ना. सो एंटी एजिंग मीन्स व्हाट? यू विल लुक यंग. व्हाट डज लुकिंग यंग मीन्स? योर स्किन विल बी मच हाइड्रेटेड, सॉफ्ट. यू विल हैव बेबी स्किन. योर रफ एजेस इन द बॉडी विल गो अवे. कहीं पे भी रफ एजेस हैं, रफ स्किन है, वो सब चला जाएगा. If there is enough energy in the body, your body will never become dull. In fact, people will say, and we have cases where their own family members say, अरे तुम्हारा चेहरा तो बड़ा खिलने लग गया है. Without any makeup, you are looking beautiful. ऐसे compliments मैं आपको बता सकता हूं हमारे practitioners को मिलते हैं. So, and I talked about that also in the previously, where I said कि आप डाइटिंग करोगे तो चेहरा ऐसा लगेगा जैसे कि जान ही नहीं है इसके. ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, ज्यादा थकावट आ जाएगी, लो एनर्जी, एंड अगेन यू विल फील टायर्ड. तो वो सब नहीं आएगा इसमें. Okay, another question would be that एक बार weight reduce करने के बाद कितना दिन हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, या फिर वेट गेन हो जाएगा नहीं करेंगे तो? देखिए,
एनीथिंग अगर आपको अपने शरीर में, इफ यू वांट टू एम्बेड एनीथिंग इन योर बॉडी, इट टेक्स एटलीस्ट 6 months. अगर आपके शरीर में किसी चीज को एम्बेड कर देना है तो आपको 6 महीने करना पड़ता, और आपको अगर जेनेटिक्स चेंज कर देना है अपना तो 3 साल करना पड़ता. तो कहने का मतलब ये कि इफ यू डू योर प्रैक्टिस, यू गेट टू योर रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड यू ड्रॉप अमेदा प्रैक्टिसेस. तो उसके बाद कुछ समय के बाद में अगेन यू, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल एंड सो मेनी थिंग्स, यू अगेन स्टार्ट गेटिंग इनटू इशू. पर आपके पास तो एक स्ट्रेंथ हमने दे दिया, सिखा दिया ना आपको. यू कैन अगेन स्टार्ट एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल वेट. दोबारा से कर सकते हैं. लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको, वंस यू स्टार्ट अमेदा प्रोसेस, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट आफ्टर 6 months टू ड्रॉप इट. 6 महीना हम चाहते हैं कि आप करें, लेकिन उसके बाद अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. Then you will actually realize what this process is doing to you. It will not only change your physicality, it will change your mind, it will change the emotional structure, it will change your energy, it will change your karmas. So it is not just a simple process. हम तो आपको उस लेवल पे अभी बोल नहीं रहे, but this is a life changing process. ये समझ जाइए. Okay, two last questions, sir. Weight कम नहीं करना है, only fat कम करना है. So in that case, is it possible? Like weighing scale में weight ठीक है, but overall it's like a fatty body, a big tummy, you know. ये आप स्ट्रक्चर ठीक करने की बात बोल रहे हैं. बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट वेट तो ठीक है, बट माई स्ट्रक्चर इज नॉट ओके. So there are certain areas where there is more fat or it is more bulky. तो आप स्ट्रक्चर ठीक करने की बात कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चर, the structural factor, the structural strength of a body is because of a factor called as vyana vayu और व्यान पक्ष. व्यान फैक्टर है आपके शरीर में जिसकी वजह से स्ट्रक्चर आपके शरीर का बनता है. एंड दिस प्रोसेस हैज व्यान फैक्टर इनकॉर्पोरेटेड इन इट. हम आपको कुछ प्रैक्टिस कराएंगे जिससे ये व्यान फैक्टर को स्ट्रेंथ मिलता है. So you will also see that your structure will get into a certain sense of balance. You can also call it beauty. ठीक है ना. तो वो हो सकता है बिल्कुल. फैट जो है, आप फैट बोल रहे हो उसको, बट फैट की वजह से वेट ज्यादा आता नहीं है. आपका वेट बेसिकली बोन डेंसिटी एंड मसल डेंसिटी की वजह से होता है. So in fact, some people might see increase in weight but loss in fat. अगर वो अमेदा का प्रोसेस करेंगे ना, they might see increase in weight but fat will come down and you will get to the right kind of weight. Okay, and sleep apnea and snoring problems, which is there more because of the increased weight, can those problems be solved? That I have already explored कि weight increase हो जाता है तो वो स्नोरिंग, आप उसको स्नोरिंग की तरीके से मत देखिए. The inhaling capacity becomes less. Your deviated septum doesn't cause breathing problem. ये आपको डॉक्टर बता रहे हैं, मगर उससे नहीं होता. पे दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ जी. So कहने का मतलब ये कि आपका इनहेलिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ कम हो गया. दैट इज व्हाई स्लीप एपनिया हो रहा. वही तो बढ़ा रहे. आई स्टार्टेड विद दिस, यस और नो, उसी से तो शुरुआत किया मैंने. स्नोरिंग इज अगेन ड्यू टू योर बॉडी इज नॉट एबल टू इनहेल प्रॉपरली, है कि नहीं. सो दैट विल इंप्रूव. यहां से तो शुरुआत किया. सी, दोबारा से देखें. विल शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप यू आर पार्ट ऑफ. पूरा वेबिनार शेयर करेंगे, दोबारा से देखें. Okay, so we'll share the program details now. We finished the question and answer with Swami ji. So हाँ वो तो हाँ ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देन आई हैव टू लीव. हाँ बोलिए. हाँ,
क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो अभी रेगुलर कोर्स कर रहे हैं वो हेल्प करेगा फैट रिडक्शन में? हाँ जी वो भी करेगा। आप उसको आराम से कमिटेडली कीजिए, वो उससे आपका वेट रिड्यूस होगा। ओके, धन्यवाद। ठीक है जी, सो आई हैव टू लीव, है ना? Thank you so much. Shift on to another program. Okay. So I'll just share the screen for the program details as people were asking in the chat. So give me 2 minutes. Okay, Anilji, can you see the screen? Yes, yes. So Ameda weight management program details. So it's a guided program conducted online on Zoom app. So what are the program levels? We'll first discuss that. Silver, Kumbha Kriyas, 21 days. Gold is the Kumbha Kriyas plus movements, 42 days. Kumbha Kriyas plus movements plus Pran Shakti diagnosis, 63 days. So these are 3 program levels. Program overview, 3 to 9 weeks, depending on the level that you choose. Classes will be 2 live classes week, 1 learning class plus 1 mentoring class. You will also get access to videos and written instruction, so you do not have to worry if you missed any live session. So what are the next steps? Fee payment, webinar special price, provide your details, login credentials for course access. Join program modules, start with silver, gold, and platinum. So silver has 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, that is 21 days. Gold has 12 classes, 6 learning plus 6 mentoring, 42 days. Platinum has 18 classes, 9 learning plus 9 mentoring. So that totals to 63 days. So class start date for Ameda is 20th March 2022, Sunday, 10 a.m. What is the class experience going to be like? Live sessions, mentors watch participants, written instructions both in English and Hindi, session recordings. What are the extras you are going to get in this is mental practice, unique diet perspective. Mind you, these are not dietary restrictions that we are going to tell you. These are diet perspectives which we are going to give you, which is pretty different from the normal weight loss programs. Simple detox and knowledge like no other. So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. So who this program is not for? It's not for people who are looking for a magic pill. हमारे पास कोई भी magic pill नहीं है, because we don't believe in shortcuts and in any short-term results. This is not for those who are not ready to work on their body. जो hard work नहीं करना चाहता है, उनके लिए ये program बिल्कुल नहीं है. It's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. This is not for those who are impatient. जैसा कि स्वामी जी ने बताया, आपका weight loss धीरे धीरे होता है. That is good for your body, rather than आप impatiently चाहें कि एक पिल आपने खाया और आपका weight loss हो गया. भले ही आपको एक दिन की खुशी मिलेगी, but long term it is very bad for your health. It's not for those who are looking for a free treatment. So special webinar price, since you all have waited throughout the webinar. Program fee for Ameda program, silver is INR 1950, gold is 3500, platinum is 6500. So how to enroll? Pay program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, submit your details to access coach dashboard, start attending classes. Payment methods, webinar early bird offer is only and only valid till 18 March 2022, 12:30 p.m. So Avisa Healing and Fitness, you need not note anything. If all the details will be shared
in the webinar WhatsApp group. So who is there in the support team? Rachna Srimal Botra, that's me. Shalini Bhagwat, who takes care of the class group. Atul Sharma, one of the senior mentors. Pooja Chopra, another mentor. Ranjana Swain, another mentor. Neha Upadhyay, who takes care of all the enrollments. Anil Chauhan, who takes care of all the details of the programs. And Himanshu Reddy, who takes care of all the technical support required by you. That is how to access the dashboard and how the videos and the PDFs are available to you. So we've already discussed these frequently asked questions. I think everybody has understood whatever Swamiji was talking about weight loss. अगर आपका और कोई question है, yes, Ameda ma'am, classes are only on Sunday. The classes are only on Sunday, Ameda ma'am. Any other question that anybody would like to ask? Yes, Lavina ma'am, I can see your hand raised. Please ask your question. Yeah, the question is like now we are already doing a program. So Okay. we do this simultaneously with the weight loss and this. Yes, you can do present one? simultaneously. Yes, you can do it simultaneously. Okay, right. Thank you. Okay. Devika ma'am, is this similar to Ashtang? Ashtang focuses on neuromuscular problems. This is focusing on weight loss entirely. What do we need to do for 60-70 minutes daily? Ishwari ma'am, आपको अपने शरीर पे काम करना है 60 to 70 minutes. You have to hold your breath in stillness. Mind को restless नहीं करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने breath के बारे में सोचना है. As Swami ji clearly said, inhalation capacity आपकी कम हो गई है. You have to work on your metabolism, and that's the only way you can come out of your weight problem. That's what you have to do for 60 to 70 minutes. Rachna ji, हाँ बोलिए. I'm doing BP ka bhi classes, Avisha ka. So can I Okay. do this one also? Yes, you can if it's not coinciding with your days. तो दोनों का एक्सरसाइज कुछ गड़बड़ नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि ये आपको कुंभक सिखाया जाएगा, तो वो आपके वेट लॉस के लिए है, तो कोई गड़बड़ का कोई चांस ही नहीं. Okay. Okay, so I could see 3 participants who have raised their hands. So one is Shailendra sir, you can ask your question, please. Yeah, madam. I just wanted to know this Kumbhak and this process will be controlling your breath, or it will be some asanas or yoga asanas, and See, what will be we the have process? 3 programs, as I already shared the program details. It depends on which one you want to enter. There is one part, the gold one, where you have some movements involved also. That is the vinyasa part. But if you want, you can just enter the basic module where you just have to do the Kumbha Kriyas. And then maybe you can get on to the next level. Okay. Okay. Yes, Parul ma'am, your question I can answer right now. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. My question is like something related to this program, as in if we like enroll for silver, gold or platinum, so we'll get into some LMS kind of thing, or we'll only get the live sessions. We'll also have the, like, where will we get all the recordings of the previous sessions? See, the thing is, you will get all the recordings in the dashboard. How to access the dashboard? We have a technical guy by the name of Himanshu Reddy. He helps you out with accessing the dashboard. तो PDF videos सब आपको dashboard में मिलेगा. Okay, and that will have all the
So Yes, only yes, the, yes. we will be like, suppose I start from this Sunday. So I will be, Okay. only the Sundays thing will be visible, no? Not the ones which will be shared later. Maybe, you know, in most of the LMS, they have the entire lot of videos or dashboard, whatever you're talking about, in many No, other no, such see, programs. अब आपने संडे क्लास अटेंड किया, जो भी वीडियो है वो आपके डैशबोर्ड में ही रहेगा थ्रू आउट द वीक. यू Okay. कैन सी. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. संडे जो Okay, क्लास. ma'am, one more thing, like I got it, Yes. sorry to interrupt. No So, problem, no problem. like silver program is all about breathing. In the gold one, you also add the movements. And what is extra in platinum? वी डू द प्राण शक्ति डायग्नोसिस. उसमें होता क्या है, आपका जो वेट बढ़ रहा है वो किस लिए बढ़ रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज. So that तो is वो through one स्वामी जी call or डायग्नोसिस something. करते हैं. पार्डन मी. How do you diagnose that? I missed that part when maybe sir नो was telling. वरीज, नो वरीज. वो स्वामी जी डायग्नोसिस करते हैं कि वो पीएचडी फॉर्म आपको देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेगा, कुछ ब्रेथ होल्ड रहेगा, तो उसके हिसाब से वो डिटेक्ट करते हैं कि आपका रूट कॉज क्या है वेट बढ़ने का, तो उसके हिसाब से वो आपको कस्टमाइज कुंभक देंगे. Okay, and this 60 to 70 minutes which you are suggesting to invest, if Yeah. suppose I go for platinum program, so it will, it will like this 60 to 70 minutes will include breath holding and everything plus the Yes. movements, or Yes, yes, yes. 60 to And 70 minutes will include everything. it has to be a proper 60-minute separately, or it can be broken in 30 minutes and or something? Because I'm a Ma'am, you working can do mother. that. Okay, no worries about that. The thing is, when you join the class, वो हम हमारे mentors आपको help कर देंगे कि क्रियाज आप एक बार कर लो, फिर movements दूसरे टाइम कर लो, वो कर सकते हो आप, कोई problem. Okay. Thank you, ma'am. I'll wait for all the details on the group, and Yes, I'm we'll sure share it I'll on be the joining. WhatsApp group. Yes, yes, yes. If you do not take Thank ghee, can there be a replacement for it? Okay. Yes, you do have replacements, but preferred is ghee. Because ghee जितना अच्छा काम करता है आपके बॉडी पे for lubrications and stuff, वो दूसरा चीज नहीं करता, unless and otherwise it doesn't suit you. Okay, so we had another participant who had raised their hand. Okay, I don't see. Yes, somebody was. Okay, tell me, Shambhavi ma'am. मुझे नमस्ते. मुझे ये पूछना था कि अगर अभी मैंने 2 लिए तो, और मुझे अगर बाद में मेरा मन चेंज करके मैंने प्लैटिनम लिया तो क्या होगा, मींस क्या कर सकते हैं? प्लैटिनम आप लोगे तो आपका प्राण शक्ति डायग्नोसिस भी हो जाएगा. नहीं, अभी मेरा फिलहाल मन अभी गोल्ड तक ही है. तो अगर बाद में, अगर वो करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि प्लैटिनम तक मैं जा सकती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ बाद में? हाँ, कर सकते हो ना, एब्सोल्युटली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थैंक यू. Okay. So I think we have come to the end of the session, since there is no other question. So happy Holi to everybody for tomorrow. Enjoy your Holi and join us for the weight loss program without holding your tongue. Thank you so much. Good night. Namaste.